हेलो, वेलकम टू ट्यूटर्स आईएएस। सो आज हम एक PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल में, जो कि है पेपर ये है रियल एनालिसिस का, मीन्स ये पेपर 2 का पार्ट है। पेपर सेकेंड का पार्ट है, क्योंकि सेक्शन ए में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस रियल एनालिसिस का जो पार्ट है, इसके जो PYQ हैं लाइक 2010 टू 2024 में इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से एक एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मैंने शुरू किया हुआ है, और इस सीरीज में केवल रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम 2024 से 2010 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हैं उसका जो है कि चैप्टर वाइज PYQ उसको हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम पहला चैप्टर जो मैंने पिक किया हुआ है वो है सीक्वेंसेज। तो सीक्वेंसेज में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 टू 2024 तक के, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लाइक इनफाइनाइट सीरीज एंड सो ऑन, उसको हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सीक्वेंस में जो चैप्टर है हमारे पास, जो सीक्वेंस है इस चैप्टर में जो 2024 में ही जो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है वो है लाइक इन 2024 सीक्वेंस का ये क्वेश्चन है, यूजिंग Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस where fn, that means fn where fn equal to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and so on। ये क्वेश्चन कब है? ये 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फुल लेंथ का क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ईयर द गिवन सीक्वेंस fn is a sequence where nth term of the sequence is given like this। So here fn is what? Fn is sequence. Fn is what? Fn is a sequence where fn means nth term of the sequence is given that 1 plus factorial 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and so on plus 1 upon factorial n। So we have to show that by the Cauchy's general principle of convergence the given sequence is convergent or not। तो देखेंगे Cauchy's general principle के यूज करना हमको। What is the Cauchy's principle says? Examine the convergence of sequence using the Cauchy's general principle says what says? Cauchy's general principle says that, see here, Cauchy's general principle क्या कहता है? Cauchy's general principle, what is fn is given that fn equal to 1 plus factorial 1। Okay, so that means fn equal to given that whatever given that, okay। So Cauchy's general principle हमको prove if the sequence sn is any sequence then sn plus p minus sn less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1। ठीक है, ये कंडीशन अगर होल्ड करती है इसको, ये Cauchy's जनरल प्रिंसिपल है। इफ द Sn इज अ सीक्वेंस then Cauchy's general principle says that Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1, then Sn is a Cauchy sequence and also sequence is convergent। or for each epsilon, okay, for each epsilon greater than 0 there exists m positive integer m such that this, or also, or you can use also like the Sn minus Sn less than epsilon for all n greater than equal to m। If for each epsilon greater than 0, for each epsilon greater than 0 there exists positive integer, that is m is a positive integer such that Sn minus Sm less than epsilon for all n greater than equal to m, then Sn is said to be Cauchy sequence and Sn is also convergent। ये है Cauchy's general principle, इसी का यूज करेंगे। Here given that in this question we have given that fn, here we have used the term Sn, so okay fine, just take the fn। So fn minus fm less than epsilon for all n greater than equal to m, then we say that the given sequence fn is a Cauchy sequence। So see here what is given that, here given that fn equal to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and plus 1 upon
factorial. That is the nth term of the sequence fn equal to and so on, given that. So therefore for n greater than equal to m, we have calculate the Sn minus Sm. Okay, or here you can, the given term is Fn, so take Fn minus Fm. Okay, equal to what? N greater than equal to m, that means 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and so on, somewhere between the 1 upon factorial 1 m plus 1 upon factorial m plus 1 and so on, somewhere. Then we will get the 1 upon factorial 1 minus 1 upon, now term fm means 1 upon factorial m plus 1 upon factorial m plus 1 and plus, sorry, that means 1 na. What is the fm means? Again 1 plus 1 upon factorial 2 and 1 upon 1 plus 1 upon factorial 1 na, that is 1. See here, it means 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 and plus so on factorial m. Okay, it is 1 upon, so 1 factorial 1 up to factorial m will be cancelled. What will we get? 1 upon 1 plus 1 plus 1 upon factorial m plus 2 and up to 1 upon factorial n. Okay, so you are given the nth term of the sequence equal to this. So we know that the how to prove the sequence is a Cauchy sequence. So take just Sn minus Sm, or here given that f, so Fn minus Fm for n greater than equal to m. So what will be the nth term? Here 1 plus, since m क्या है, n क्या है, m के आगे है, m से ग्रेटर है, so श्योर 1 इस सीक्वेंस इस टर्म में क्या होगा, 1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, m एथ टर्म भी आएगा इसमें पहले, फिर m प्लस 1 आएगा, फिर एंड सो ऑन करते हुए n तक जाएगा, क्योंकि n क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m एथ इसमें क्या आएगा, m एथ टर्म तक आएगा 1 प्लस m एथ तक, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन factorial m plus 1 plus 1 upon factorial m plus 2 and so on plus 1 upon factorial m. Now see one more thing here, that see here 1 is greater than equal to 1, 2 is factorial 2 is greater than equal to 2, is it? Factorial 2 means 2 greater than equal to, equal यहाँ पे ही है तो ग्रेट, दैट करेक्ट लिखा हुआ है. Factorial 3 greater than equal to 2 square. Check, factorial 3 means 6 and 2 square means 4, and factorial 4 is greater than equal to 2 to the power 3. Check, factorial 4 means 24 and 2 to the power 3 means 8. That is correct. So see, if 4 then 2 to the power 3, 5 then 2 to the power 4 and so on, if the n whatever m, if the m, that means m factorial will be greater than equal to 2 to the power m minus 1, and 3 है तो एक कम है, 4 है तो उससे एक कम है and so on. So factorial m greater than equal to 2 to the power m minus 1, and then actually then 1 upon 2 to the power m minus 1 will be greater than equal to factorial m, ये होगा. ओके, और अगर इसका एक टर्म और आगे का नोट करते तो क्या लिखते हैं, 1 upon 2 to the power m greater than equal to 1 upon factorial m plus 1. ठीक है, 1 को हम नोट कर सकते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या ये कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 भी कर सकते थे. फैक्टोरियल 2 मींस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. दैट मींस अगर m टर्म लिखे तो 2 टू द पावर m minus 1, अगर m plus 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, so on, or this can be written as 1 upon 2 to the power m minus 1 will be greater than equal to 1 upon factorial m.
देन यूज, इसका यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो सी 1 upon factorial m plus 1 and that will be less than, less than, that means less or equal to, less or equal to 1 upon 2 to the power m. ओके, देख सकते हैं यहाँ पे 1 upon factorial m plus 1 is actually less or equal to 1 upon 2 to the power m, so on. So plus, and what will be next, that means 1 upon factorial m plus 2 will be less than 1 upon 2 to the power m plus 1 and so on up to, see, if the m plus 1 then less than or equal to 1 upon 2 to the power m, if 2 then 1 come, that means 1 upon 2 to the power m plus 1 and n factorial है तो उसे एक कम चाहिए यानी n minus 1 हो जाएगा, means 1 upon 2 to the power n minus 1. Okay, now take the 2 to the power m is common, equal to 1 upon 2 to the power m, then 1 plus 1 upon 2 to the power m कॉमन ले लेते हैं, प्लस ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर 2 to the power m कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या आएगा 1 upon 2 to the power n minus m minus 1, एक माइनस m भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा n minus 1 एंड सो ऑन. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन रहा 1 प्लस r इक्वल टू 1/2 ले लें, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यू एंड सो ऑन. जीपी है, दिस वन इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका nth टर्म का सम कितना आएगा बताइए हमको क्या होता है वो, a 1 माइनस r टू द पावर n अपन 1 माइनस r. nth टर्म का सम क्या होता है जीपी में, nth टर्म का सम होता है a की वैल्यू वहाँ पर 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 है और जितने भी टर्म्स हैं एंड 1 माइनस r, ये देखेंगे n टर्म्स की सम होता है जीपी का. सो सी हियर दैट मीन्स 1/2 टू द पावर m एंड दैट मीन्स 1, a की वैल्यू 1 ही है, 1 माइनस कितने वैल्यू है हमारे पास, कितने टर्म्स हैं एक्चुअली n माइनस m माइनस 1 या 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली n माइनस m टर्म्स है, दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी है 1/2 टू द पावर n माइनस m. ठीक है, अब n माइनस 1 एक टर्म ले लेते हैं तो माइनस 1 है यहाँ पे, एक कम है और यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और फिर यहाँ से एक कम, दैट मीन्स पूरा टर्म लेंगे तो कितने टर्म्स हैं n माइनस m, तो n माइनस 1 अपान 1 माइनस r मीन्स 1/2. ओके, दैट मीन्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स 2 अपान 2 टू द पावर m और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस m. ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर m माइनस 1, 1 अपान इनसाइड ले जाएंगे तो 2 टू द पावर m माइनस 1 एंड माइनस 2 टू द पावर m माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 टू द पावर n माइनस m एंड प्लस m माइनस 1 ऐड करेंगे, m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 टू द पावर n minus 1 and that will be less or equal to 1/2 to the power m minus 1. How? See here, they think since n is greater than equal to m imply that n minus 1 greater than equal to m minus 1, okay, then 2 to the power n minus 1, that will imply that 2 to the power n minus 1 greater than equal to 2 to the power m minus 1 and that will imply that 1/2 to the power m minus 1 will be greater than equal to 1/2 to the power n minus 1. Okay, that means 1/2 to the power m minus 1 will be greater than or equal to 2 to the power n minus 1. Okay, that means this value is less or equal to this, so we can take it, that means whole value will be less or equal to 1/2 to the power m minus 1. Okay, so now, so therefore
therefore for given क्या करें, एप्सिलॉन ले लेते हैं ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, given epsilon greater than equal to 0, f of n minus f of m will be less than epsilon if कब हो जाए, ये वाली किसकी आ रही है, fn minus fm की आ रही है. Now we have calculated the mod of fn minus fm less or equal to आ चुका है कहाँ तक, यहाँ से. if for given epsilon greater than equal to 0, that value will be less than epsilon if this will be, if 1 upon 2 to the power m minus 1 will be less than epsilon. Okay, now solve this equation, or imply that just take the here, that means 1 upon 2 m minus 1, that means 2 to the power m minus 1 will be greater than 1 upon epsilon. 2 to the power m minus 1, if 1 upon 2 to the power m minus 1 less than epsilon, imply that 2 to the power m minus 1 will be greater than 1 upon epsilon. 1 upon epsilon, and solve this one. Take the log, then you will get what? Imply that log of 2 to the power m minus 1, log of 2 to the power m minus 1 less than log of 1 minus epsilon. I think greater or less? Greater. So use the term here, greater. Okay, imply that means m minus 1 and log of 2 greater than log of 1 upon epsilon. Imply that m minus 1 will be greater than log of 1 upon epsilon and log of 2. Imply that m greater than log of 1 upon epsilon and log of 2 to the power minus 1 and plus 1. Okay, log of 1 upon epsilon, log of 2 to the power minus 1, and that is the plus 1. That is, if m greater than this, then this inequality hold. That means 1 upon 2 to the power m minus 1 less than epsilon कब होगा, इसी को सॉल्व किए हम, कहाँ तक है, if m greater than this. If m greater than this, then 1 upon 2 to the power m minus 1 will be less than epsilon, and when this less than epsilon, that means fn minus fm will be less than epsilon. So we can say that fn minus fm less than epsilon when actually when, that means when m greater than equal to this. And see here, log 1 upon epsilon is a positive real number, log 2 is also positive, that means 1 upon log 2 is positive number, plus 1, that will be a positive number. We'll get an integer m. अगर m से बड़ा कोई नंबर हम चूज करें, कोई पॉजिटिव इंटीजर, if we choose a positive integer, greater than a positive integer m, m1 greater than equal to m, then इस m से भी बड़ा एक चूज कर लेते हैं इक्वल m1 greater than equal to m, then can we say that then for each epsilon greater than 0, fn minus fm will be less than epsilon for all n greater than equal to m1. Okay, इस m के लिए अगर m के वैल्यू से ग्रेटर है, हर एक इस m के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, m पॉजिटिव इंटीजर, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है. ओके, m के लिए m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m अगर उससे ग्रेटर है, m की वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है, मींस m से बड़ा अगर कोई नंबर लें तो उसके लिए होल्ड करेगा ही. जस्ट टेक चूज द पॉजिटिव इंटीजर m1 greater than equal to m, then this will be hold for all n
greater than equal to m1. ओके, सो देखते हैं यहाँ पे. सो मीन्स जैसे इससे बड़ा है इसके इक्वल चूज कर लें n जो है, तो उस केस में fn minus fm always less than epsilon for all n greater than equal to m for each epsilon, and imply that fn is a Cauchy sequence. N is a Cauchy sequence, and by Cauchy's general principle, and by Cauchy's general principle, fn is a convergent sequence. Since every Cauchy sequence is convergent, so fn is a Cauchy sequence there, and by Cauchy's, and therefore by Cauchy's general principle, fn is a convergent sequence. Okay, fine. So see again. So we have to prove that by Cauchy's general principle of convergence, examine the convergence of the sequence. So the nth term of the sequence is given that 1 plus 1 upon factorial 1 and so on up to 1 upon factorial n. So therefore, for given n greater than or equal to m, first calculate the value of fn minus fm. What will be 1 plus up to nth term? Surely means we will take the here mth term, that means 1 plus up to mth term, that will be cancelled. We will get the 1 upon m plus 1 factorial plus 1 upon m plus 2 factorial and so on. We know the 1 upon factorial m plus 1 will be less or equal to 1 upon 2 to the power m. How? Less or equal to 1 upon 2 to the power m. How? We have already calculated here. You can see 1 is greater than 2 is factorial 2, greater than equal to 2 and so on. 3 factorial 3 greater than equal to 2 to the power 2 and so on. Factorial m greater than equal to 2 to the power m minus 1, just 1 less than this number. That means factorial m plus 1 will be greater than equal to 2 to the power m, and take the reverse, that means 1 upon 2 to the power m minus 1 will be greater than equal to factorial 1 upon factorial m plus 1, or 1 upon next term will be what? 1 upon 2 to the power m plus 1. So m next term will be 1 upon 2 to the power m will be greater than equal to 1 upon factorial this, or say here. So in a similar case we can write means 1 upon factorial m plus 1 will be less than 1 upon 2 to the power m. This will be less than 1 upon 2 to the power m plus 1 and so on. N means 1 upon 2 to the power n minus 1. So less than this one. Take the 1 upon 2 to the power m as common. We will get a geometric series GP, and take the nth sum of nth term of this series, that means 1 minus r to the power n 1 minus r. We will get the result 1 upon 2 to the power m minus 1, 1 upon 2 to the power m minus 1, and here calculate 1 upon 2 to the power n minus m and 1 upon 2 to the power m minus 1. We will get 1 upon 2 to the power n minus 1. That means, and here we can see that we have, since we have n greater than equal to m, m क्या है, n जो m से बड़ा है, that means in this case n minus 1 will be this, and therefore 2 to the power n will be greater than equal to this. Then 1 upon 2 to the power m minus 1 will be greater than equal to 1 upon 2 to the power n minus 1, and this quantity is greater than or equal to this, so whole quantity will be less or equal to this one, 1 upon 2 to the power this. Okay, now choose this one. If this one is less than epsilon, means for a given epsilon fn minus fm will be less than epsilon. When? If this will be less than epsilon, इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद एक नंबर आएगा m, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है. अगर इससे m की वैल्यू इससे ग्रेटर हो रहा है तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, और m वहाँ पे क्या है, इंटीजर है. जस्ट टेक द पॉजिटिव इंटीजर m1 greater than equal to m. What will be hold? If you take or choose a positive integer m1 greater than equal to m, that means m के लिए होल्ड कर रहा है m1 के लिए भी होल्ड करेगा. For m1, for each epsilon greater than 0, this will be less than epsilon for all n greater than equal to m1, and that is the actually definition of Cauchy sequence. Therefore this is a Cauchy sequence, and by Cauchy's general principle every Cauchy sequence is a convergent sequence. Okay, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, 2022 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी 24 में,
In 2024, only one question has been asked for sequences. Next video we will continue for 2023 and 2 and so on. Okay, thank you.